Hello students, hope you all are fine and taking good care of yourself. And also hope that you all have seen the video and the concept are clear. Now in this video we'll be discussing about advantages and disadvantages of synthetic fibers, plastic, types of plastic, properties of plastic and their effect on the environment. Now student, we are going to see the advantages of synthetic fibers. Yes, हमने कौन कौन से synthetic fibers पढ़े अभी तक? हमने रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, स्पेंडेक्स इन सारे synthetic fibers की properties और uses देखे. अब हम उनके क्या क्या advantages हैं वो देखने वाले हैं. पहला कि mostly सारे synthetic fibers have good elasticity. They do not wrinkle easily और इसीलिए हम उसे easily wash करके पहन सकते हैं. ये ज़्यादा टिकते हैं. They are more durable and less expensive और ये varieties of color में available है. Mostly synthetic fibers जो है they can handle heavy loads और without breaking also. So what are the advantages? Most synthetic fibers have good elasticity. They do not wrinkle easily. They are generally more durable, less expensive and most readily available than those of natural fibers. Next, they are readily available in different colors. Most synthetic fibers can handle heavy loads without breaking. Students, we have just seen the advantages of synthetic fiber. In that we saw that they are more durable, stronger, elastic in nature. Now let's see an activity to prove that most of the synthetic fibers are stronger than the natural fibers. Students, we have just seen the advantages of synthetic fiber. In that we saw that they are more durable, stronger, elastic in nature. Now let's see an activity to prove that most of the synthetic fibers are stronger than the natural fibers. Strength of a fiber. Let us perform an activity. Strength of a fiber. Strength of a fiber. Let us perform an activity to find out the strengths of different fibers. Take an iron stand with a clamp. Take 4 threads of different materials like cotton, wool, silk, and nylon, each of about 60 centimeters in length. Now take the cotton thread and tie it to the clamp so that it hangs freely. At the free end, suspend a pan in such a way that weights can be placed in it. Add weights one by one till the thread breaks. Note down the weight required to break the cotton thread. This weight indicates the strength of the fiber. Now hang the woolen thread and repeat the activity. Note down the weight required to break the thread. Repeat the activity by using the silk thread. You will observe that, when a weight of 200 grams is placed in the pan, the thread breaks. Now use the nylon thread and add weights till the thread breaks.
you will find that, even after adding all the weights, the thread remains intact. From this activity, you can conclude that nylon is the strongest. Now we are going to discuss about disadvantages of synthetic fiber. First, ये फाइबर जो है जब भी हम प्रेस करते होंगे, आयनिंग करते होंगे कपड़े की, तो इसे बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर थोड़ा भी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो वो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाटर जो है या तो कह सकते हैं मॉइस्चर जो है वो बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, तो जब भी पसीना आता है तो ये हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वी फील अनकंफर्टेबल टू वेयर देम, स्पेशली इन द हॉट डेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि इट कैचेस फायर वेरी इजीली, और जब भी हम किचन में काम करते होंगे तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट, most fabric made from synthetic fibers required ironing as they melt easily. Second, most fabric made from the synthetic fibers absorb very little moisture. They become sticky when the body sweats and make us uncomfortable to wear in hot days. And the third one, fibers catches fire very easily, so it is dangerous to wear them near the sources of fire, especially during working in kitchen. Students, if we look around ourselves, we'll be finding so many things that are made up of plastic, and we are using them in our day-to-day life right from the morning to the end of the day. Like in the morning we are brushing our teeth, the toothbrush is made up of plastic, hair comb are made up of plastic, lunch box, water bottles, all these are made up of plastic. Now today we'll be discussing about plastic, properties of plastic and their effect on the environment. So first of all we'll be seeing what are plastic. Plastic are very important group of synthetic material that are both durable and versatile. The plastic are polymers that can be molded or shaped into different objects by the application of heat and pressure. तो ये प्लास्टिक जो है वो भी कैसे सिंथेटिक फाइबर की तरह मोनोमर से बने हैं, और इसको हम जो है हीट और प्रेशर अप्लाई करने के बाद कोई भी शेप जो है उसमें चेंज कर सकते हैं. The monomers in the plastic may be arranged in two types. A linear arrangement like a chain of beads. Linear arrangement में क्या होगा, मोतियों की माला में जैसे एक एक मोती होता है उसी तरह जो है मोनोमर का अरेंज होगा. किसमें? तो कि लीनियर अरेंजमेंट में. और ब्रांच्ड or cross-linked arrangement where different polymer chains are connected by side chain और cross-linked. और ब्रांच में जो है मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, कैसे? साइड चेन और क्रॉस लिंक की तरह. अब based on the arrangement of the monomer, the plastic can be of two types, thermosetting and thermoplastic. अब हम एक के बाद एक इन दोनों टाइप के प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज देखेंगे. कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक. Thermoplastic are linear and lightly crossed polymers. In thermoplastic, long polymer chain are linearly linked with each other, due to which on heating the individual polymer chain can slide over one another. This makes thermoplastic soft and capable of melting.
ये थर्मोप्लास्टिक में जो है पॉलीमर चेन लीनियरली लिंक्ड है एक दूसरे से। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो इंडिविजुअल चेन जो है ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है और इसी स्लाइडिंग की वजह से ये प्लास्टिक क्या हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है और वो मेल्ट होने लगता है। तो हम इसको मेल्ट होने के बाद अलग अलग शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीमर चेन जो है वो लीनियरली लिंक्ड है। इसके एग्जाम्पल है ये जो अलग अलग टॉयज होते हैं, ये टॉयज किससे बने हैं? थर्मोप्लास्टिक से। फिर हम हेयर को कॉम्ब करने के लिए जो कॉम्ब यूज करते हैं वो भी किससे बना है? थर्मोप्लास्टिक से। देन PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये भी जो है किससे बना है? तो के थर्मोप्लास्टिक से बना है। सो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट, लीनियरली एंड लाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, देन they can be melted by heating and molded into desired shape. This is a reversible process. So these are the characteristics of thermoplastic. Now we are going to see about next type of plastic, that is thermosetting. Thermosetting are the three-dimensional structure polymer with heavy cross linking. They cannot be remolded after reheating. So in thermostatic plastic, long polymer chains are cross-linked with each other. This linking prevents the displacement. Means एक दूसरे के साथ पॉलीमर जो है टाइटली अटैच्ड है, इसकी वजह से ना तो वो हिल सकते हैं ना ही एक दूसरे पे स्लाइड हो सकते हैं। कब? जब हम उसको गर्म करते हैं। इसकी वजह से ना वो सॉफ्ट हो सकते हैं और ना ही वो मेल्ट होते हैं। वंस दे हैव बीन सेट टू पर्टिकुलर शेप, दे कैन नॉट बी softened again. So this cross linking prevent the displacement or sliding of individual polymer chain on heating. Due to this, thermosetting plastic do not become soft on heating once they have been set for particular shape. और इसकी वजह से ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम थर्मोसेट्स भी कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है बैकेलाइट और मेलामाइन। सो वंस अगेन आई विल बी रिपीटिंग, heavily cross-linked polymers after shaping the plastic forms thermosetting plastic. Thermosetting plastic cannot be remolded after reheating. Now student, let me ask one question. Should the handles and the bristles of the toothbrush be made up of same material? Means टूथब्रश का हैंडल और उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो सेम ही मटेरियल के बने होने चाहिए? ओके, द आंसर इज नो, they should not be made up of same material as bristles should be soft and flexible to suit its function as compared to the handles should be tough and non-flexible. Means दोनों के मटेरियल अलग अलग होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन. Dear student, we will now discuss about the general properties of plastic. First one, thermal and electrical conductivity. Plastics are poor conductor or insulator of heat and electricity. That's why they are used in making handles of cooking vessels, making containers used in microwave ovens. They are also used as a covering material in electrical appliances, cords, electrical outlets, switches and wirings. ये प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम किचन में जो भी खाना बनाने के वेसल्स होते हैं उसके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक से बनाते हैं.
दूसरा, माइक्रोवेव ओवन के जो भी कंटेनर्स है उसमें हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। हमारे स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, वायर के ऊपर का कवरिंग है, वो भी किससे बनता है? प्लास्टिक से, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट property is solubility in water. Plastic are insoluble in water. That's why they are used for making bottles, buckets and other containers used for storing water. प्लास्टिक जो है वो पानी में soluble नहीं होते हैं, इसीलिए पानी की bottles जो हैं, buckets हैं, वो हम किससे बनाते हैं? प्लास्टिक से बनाते हैं। Next property is effect of flame. Most plastic are inflammable, that is they catch fire easily. तो ये सारे के सारे प्लास्टिक जो हैं वो क्या है? इनफ्लेमेबल है, दैट इज वो आग जो है तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए मेलेमाइन जो है हम उससे फैब्रिक बनाते हैं, वो क्या करता है? वो फायर को रेजिस्ट करता है। सो मेलेमाइन इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक which resist fire. The next property is reactivity. Plastic do not corrode or rust. Therefore, they are used in homes for storing food and in laboratories for storing chemicals. ये प्लास्टिक जो है मेटल्स की तरह करोड नहीं होते हैं या तो आयरन की तरह रस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसे खाने की चीज़ें स्टोर करने के लिए और लेबोरेटरी में केमिकल स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव इन नेचर और यू कैन से दे डू नॉट करोड और रस्ट. So these are the properties of plastic. What are they? I'll repeat them. The thermal and electrical conductivity. They are poor conductor of heat and electricity. Next, solubility in water. Plastic are insoluble in water. Effect of flame. Plastic are inflammable and reactivity. Plastic do not corrode or rust. We have just discussed about the properties of plastic. Now, let me ask one question based on that. Explain why plastic containers are flavored for storing food. Yes, the answer is plastic containers are favored for storing food because it is light in weight, it is non-corrosive, it is very cheap and durable, and also very easy to handle. Now we'll be discussing about plastic and the environment. But before that, we'll be discussing the two key terms, biodegradable and non-biodegradable waste. Student, you know that our population is constantly growing. This leads to the corresponding growth in waste product as well. This waste product can be divided into two, biodegradable and non-biodegradable waste. The waste which get decomposed through natural processes such as action of bacteria is known as biodegradable waste. जो वेस्ट जो है नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है पेपर है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कहलाते हैं। दूसरा वेस्ट जो है उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। द वेस्ट विच इज़ नॉट ईजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस is known as non-biodegradable waste. मीन्स ये बैक्टीरिया जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स हैं, फिर
और केमिकल्स जो है DDT, वो सारे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नेचुरल प्रोसेस से इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से। सो द वेस्ट विल बी ऑफ टू टाइप्स, biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable will be decomposed through natural processes, and non-biodegradable the waste which is not easily decomposed by natural processes. और बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल क्या है? पेपर है, क्लॉथ है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के प्लास्टिक, glass, metals and chemicals. Now, if we want to throw our waste in a dustbin, then we have to use green colored dustbin for biodegradable waste. अगर हमें हमारा कचरा जो है डस्टबिन में डालना है तो हमें ग्रीन कलर की डस्टबिन में डालना है। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें कौन से कलर की? तो कि ब्लू कलर की डस्टबिन में डालना है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट such as food items should be thrown in green dustbin, and non-biodegradable waste should be thrown in blue dustbin such as plastic and glass. Now we'll be discussing about the environmental hazard. Despite many use of plastic, there are environmental and health hazards associated with their disposal. This is because plastic are non-biodegradable waste, that is, they cannot be decomposed by microorganisms. And the accumulation of plastic is considered as a serious problem because most of the method used to dispose them results in some type of damage to the environment. बच्चों, हम प्लास्टिक का यूज़ तो बहुत कर रहे हैं, बट ये प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मीन्स उसे बैक्टीरिया या तो और कोई भी नेचुरल प्रोसेस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और इसकी वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। पहला, दे हैम्पर द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ये प्लास्टिक जब हमारी लैंड पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो ये रेन वाटर को सॉइल के अंदर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है उनको ग्राउंड वाटर मिलता नहीं है और उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो प्लास्टिक विच एक्यूमुलेट्स ऑन लैंड prevent the rainwater from seeping into the ground. This hampers the recharging of groundwater and it prevents the plant from receiving the water through the soil. तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल ज़्यादा नहीं होगा और उसकी वजह से वापस प्लांट को जो है प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है? दे हैम्पर द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। अब दूसरा इफेक्ट, हार्मफुल टू एनिमल्स। जब हम बच्चों खाना फेंकते हैं, वेस्ट फेंकते हैं, तो हम पॉलीथीन बैग्स में फेंकते हैं, और ये जो एनिमल्स है जैसे काव है, ये पूरा का पूरा वेस्ट प्लास्टिक के साथ ही खा लेती है। और ये जब प्लास्टिक के साथ खाती है तो ये पॉलीथीन बैग जो है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करती है और वो सांस जो है प्रॉपर नहीं ले सकते, और इसकी वजह से उन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो सेकंड उसका इफेक्ट क्या है? हार्मफुल टू एनिमल्स। When animals such as cow eat the food waste into the garbage dump, they eat the material like polythene bags. This plastic material chokes their respiratory system, or they form a lining in their stomach which causes their death. तो उनकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है।
Next, we are going to discuss about the loss of aquatic life. टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है हम पानी में डंप करते हैं. कहाँ पे? तो के रिवर्स पे, ओशंस पे, लेक्स पे, जिसकी वजह से ये पानी जो है पोल्यूट हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ की मिजरेबल हो जाती है. मैराइन एनिमल्स जैसे फिशेस हैं, सी बर्ड्स हैं, ये प्लास्टिक को स्वॉलो कर लेते हैं, जिनकी वजह से इनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है. So, loss of aquatic life. Tons of plastic is dumped into the water bodies such as rivers, ponds, lakes, streams, oceans, etc. and pollute them. This makes the aquatic life miserable. Marine animals swallow the plastic materials which leads to the premature death. अब ये प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को तो पोल्यूट कर ही रहा है, साथ साथ में हम ह्यूमन बीइंग्स को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहा है. इसकी वजह से हमें अलग अलग टाइप के डिसीजेस भी हो रहे हैं. जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो अगर उसकी फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं तो हमारे को अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे अस्थमा हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम जो है उसको भी वो डैमेज करता है. सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूल in the atmosphere. This increase the risk of heart diseases, respiratory problems, skin problems, and the toxic produced in the air can also damage our nervous system. हमारी पूरी की पूरी nervous system को भी damage कर सकते हैं. Now student, we are going to see few things that can be done to limit the harmful effect associated with the plastic. And which are they? First, say no to plastic. Second, plastic recycling. And third, proper disposal or dumping. So बच्चों, जब भी हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो और दुकान वाला जो है हमें प्लास्टिक की बैग में वो सामान दे तो हमें उसे मना करना है कि डोंट यूज़ द प्लास्टिक, इंस्टेड ऑफ दैट ही कैन यूज पेपर बैग. और दूसरा, अगर हो सके तो घर से ही रीयूजेबल क्लॉथ बैग जो है जैसे कॉटन की या तो जूट की बैग जो है लेके जाएं तो हम प्लास्टिक जो है उसका यूज अवॉइड कर सकते हैं. सो डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग. इंस्टेड आस्क फॉर प्रॉपर पेपर बैग or carry a usable cloth bag with you. Okay. Second is plastic recycling. Reuse the plastic bag that you have at home. और घर पे हमारे पास जो भी प्लास्टिक बैग है उसका हम रीयूज कर सकते हैं, बट हो सके तो उसे अवॉइड करो. और थर्ड है प्रॉपर डिस्पोजल और डंपिंग. हमें ये प्लास्टिक की बैग या तो कोई भी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हो वो इधर उधर रोड पे नहीं फेंकनी है. दूसरा, पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास ब्लू कलर की डस्टबिन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होती है, तो हमें हमारा कचरा प्लास्टिक का वो ब्लू कलर की डस्टबिन में फेंकना है. सो proper disposal or dumping the plastic material and the other non-biodegradable waste should always be dumped into blue color bins to make the recycling process easy. And do not throw the plastic bag at the roadside or in the water bodies. So these are the small things which we can do to avoid the plastic pollution. Come on, Dora, let's go shopping. Also, do get shopping bags along. Here I come, Mom. What is this, Dora? Why did you get a plastic bag? But why, Mom? What is the problem with a plastic bag?
There's a big problem with plastic, Dora. It never really goes away, even when you throw it out. When you put something in trash, it doesn't just disappear. It has to go somewhere, right? Most of the time, a garbage truck takes it to a place called a landfill, which is basically a giant hole in the earth. Once they're in a landfill, most of the materials like wood and paper dissociate into smaller and smaller pieces until they break down completely. A wooden chair might take 10 years to dissociate, while some clothes might just take a few months. But plastic, on the other hand, might take 500 to 1000 years. Even worse, plastic can blow away from garbage, trash and landfills and end up in the ocean. It not only pollutes and dirties the ocean, but it also harms the animals that are living in the water, as they might just swallow plastic either accidentally or thinking that it's food. When people who eat seafood consume it, these toxic materials are transferred to the human body also. The sea animals might also get trapped in the plastic trash. That's so sad. I never wanted to harm fish. That's okay. It's good that you realize. So for that matter, you'll have to stop the use of plastic stuff. Cool. From now on, I will not use plastic bags. Rather, I will use paper and cloth bags which could be reused again and again and do not harm the environment also. Spread awareness among my friends and family regarding the use of plastic. Try to reuse as much as I can so that I could minimize the amount of waste and garbage that is produced. And say a no to plastic bags for a better and sustainable future.